का एक ही taxiway, so it should have multiple taxiways. It may happen that the different types of aircraft are using the runway. So अगर तो एयरक्राफ्ट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकना पड़ रहा है तो जो लास्ट में टैक्सी वे उस पर ही वो एग्जिट कर दे। अगर कोई छोटा एयरक्राफ्ट है तो पहले रुक गया तो जो उसके एडजेसेंट टैक्सी वे मिलेगा तो वहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट इज़ वाई दे आर रिटन ओवर हियर दैट यू शुड हैव मल्टीपल taxiways. So such taxiways are also called as exit taxiway that help you to immediately exit the runway. The exit taxiway should be designed for high turn-off speed. It results in the reduction of the runway occupying time. ठीक है, जितनी जल्दी आप एग्जिट कर जाएंगे उतना ज़्यादा आप एयरक्राफ्ट्स को लैंड करवा सकते हैं बिकॉज आपका रनवे उतना खाली रहेगा। हेंस इट इंक्रीजेस द एयरपोर्ट कैपेसिटी। When you are supposed to study about what the length of the taxiway, the width of the safety area, the longitudinal gradient, transverse gradient, side distance, and turning radius. So step by step, we'll be studying all these parameters, and also about the speed of the aircraft at the taxiway. वो स्पीड की बात कर रहे हैं दैट जो स्पीड है एयरक्राफ्ट की टैक्सीवे इट इज मच लोअर दैन दैट ऑफ द रनवे। इट इज ऑब्वियस। Thus, the design standard for the taxiway is not as rigid as that of the runway because taxiway क्या है कि एक तरह का मीडियम है जो आपके एयरक्राफ्ट को मेन रनवे से टर्मिनल बिल्डिंग तक लेके जाएगा या टर्मिनल बिल्डिंग से रनवे तक लेके जाएगा। तो उतने हाई स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के लिए आपको डिज़ाइन नहीं करना बिकॉज ऑपरेटिंग स्पीड बहुत कम है टैक्सीवे पे। So length of the taxiway it should be short as practicable. No specific recommendations by any agencies have been made for the length of the taxiway. Then you have is width of the safety area. Width of the safety area it includes the taxiway pavement shoulders on either sides that may be partially paved plus the area that is graded and drained. Means it is an extra area, a separate area that is adjacent on both the sides to the taxiway that is on the same gradient. It may be paved, it may not be paved. The width of 7.5 meter of the shoulder adjacent to the pavement edges should be paved with the light strength material। वो कह रहे हैं जो साथ वाला एरिया है जो लगभग स्पैन करेगा 7.5 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टैक्सीवे इट कैन बी paved with a light strength material। Eventually they are not to be used but during emergency it can also be used। The surface must be impervious, smooth, and should not disintegrate due to the hot blast of the jet engine because eventually your plane is still in moving condition, so still it will have hot blast that will be coming out of the engines. So the material should not degrade due to the hot blast. Then your what do you have your longitudinal gradient. Now if the gradient is steep, there will be a greater consumption of fuel. So that is what you don't want. So ICAO, the governing body, it recommends that the longitudinal gradient should not exceed 1.5% for Type A and Type B airport and 3% for the other type of the airports. Okay, so the gradient is also given to you that should not be exceeded for a particular type of airport. Then you have the transverse gradient. The transverse gradient is provided for the quick drainage purpose. It's just like camber on the highways that you have studied. So ICAO recommends that the transfer gradient should not exceed 1.5% for ABC and 2% for type B and E type airport. So this type of the airport we have already studied in the classification part of the airports. Then you have a side distance. So here again you have is that ICAO, International Civil Aviation Organization, it recommends that for ABC type airport the surface of the taxiway should be visible from 3 meter height for a distance of 300 मीटर। 3 मीटर हाइट से इतना आपको डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए। ना फॉर डी टाइप द सरफेस ऑफ द टैक्सीवे शुड बी विजिबल फ्रॉम 2.1 मीटर हाइट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। इतनी हाइट से इतना डिस्टेंस आपको विजिबल होना चाहिए। ये साइड डिस्टेंस का क्राइटेरिया होगा। देन यू हैव टर्निंग रेडियस। Now whenever there is a change in the direction of the taxiway a horizontal curve is provided, but obvious देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। आप रनवे छोड़ के टैक्सीवे में आप एंड कर रहे हो, आप उसमें एंटर कर रहे हो
तो obviously एकदम तो करोगे नहीं, तो there has to be some radius that is supposed to be provided to the taxiway. Then the curve should be designed in a way that the aircraft can negotiate it without any significant reduction in the speed. क्या है कि कर्व्स को अपने इस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि वो हाई स्पीड पे भी जो आपका प्लेन है उनसे नेगोशिएट करके वो टैक्सीवे में एंटर कर पाए. सो द रेडियस ऑफ द कर्व शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. सो लार्जेस्ट सर्कुलर कर्व्स आर प्रेफर्ड for the radius, for the turning radius of the taxiway. So this is the radius of the curve that we have given, that is supposed to be u, that is v square divided by 1 to 5f, where r is the radius in meter, v is the speed in kilometers per hour, and thereafter f you have is the transverse coefficient of friction, that is assumed to be 0.13. All right. Then there is another equation that is according to Horenzef, the radius of the taxiway should be so provided that the distance of the LU strut, that is the main nose gear, is not less than 6 meters from the pavement edge. जो नोज गियर का डिस्टेंस है, ओके, दिस इज एलयू स्ट्रट ऑफ द मेन गियर, जो पीछे वाला गियर है, जो मेन, जो पीछे दो आप देखते हैं वाइल लैंडिंग, दैट इज द फर्स्ट टच डाउन हैपनिंग. ये उन स्ट्रट्स की बात कर रहे हैं जो नीचे आ जाते हैं. सो उन स्ट्रट से इट शुड नॉट बी लेस देन 6 मीटर फ्रॉम द पेमेंट एज. ये रेडियस की बात कर रहे हैं कि रेडियस अब किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये 6 मीटर का फैक्टर आप आगे भी यूज़ करेंगे. अब आगे इन्होंने इक्वेशन दे रखी है कि आर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. इस 0.388 w square divided by 0.5 t minus s. So w is the wheelbase of the aircraft in meters and t is the width of the taxiway in pavement, and s is what? S is the distance of the midpoint of the main gear. ये जो है ना पीछे आप देखते हैं टू व्हील असेंबलीज होती है, ठीक है. तो एस क्या होगा? एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट हो गया. मिड पॉइंट से लेके कहाँ तक का? मिड पॉइंट ऑफ द मेन गियर एंड द एज ऑफ द टैक्सीवे, मतलब यहाँ से लेके जहाँ पे आपकी टैक्सीवे का एज है उसका डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. और ये 6 मीटर कौन सा डिस्टेंस कह रहे थे? 6 मीटर ये वाला डिस्टेंस कह रहे थे कि जो आपका मेन गियर है, जिस साइड को भी आप टर्न कर रहे हैं, चाहे इधर को इधर को, तो जो पेमेंट एज है, ठीक है, वो जो आपका मेन एलियो स्ट्रट है जो नीचे आता है, व्हील आता है, उससे 6 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस पेमेंट एज तक का. And then based upon this you have a numerical. So this is a diagram that has been given for the radius. So this is S, जो मेन एलियस स्ट्रट है उससे लेके जो साइड ऑफ द पेमेंट है S, the distance between the midpoint of the main gear and the edge of the taxiway pavement, that is to be denoted in meters. अब आप इसमें आ जाए, इसमें आपको समझ आ जाएगा. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? टैक्सीवे इज टू बी डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बोइंग 707-320 which are the following characteristics determining the turning radius of the taxiway. What is the wheelbase? Wheelbase is कि nose gear से लेके main gear तक आपका कितना distance है, ठीक है. This that is 17.70 meters. Then what is the tread of the main loading gear? This is 6.62 meters. And what is the turning speed? Is 40 meters. What is the coefficient of friction between the tire and the pavement? Is this much. So here, first you have is your turning radius v square divided by 1 to 5f. So v is how much? V is given to you 40. F is how much? Is given to you 0.13. So directly you will input and you will find out the value of the turning radius. So this is the simple expression that you are using. Then you have it from second part from Horenzef equation. So this is the equation that is we use 0.388 w square divided by t divided by 2 minus s. So here w is what? W is the distance of the nose gear from the main gear, that is the wheelbase that we are talking about. It is given to you in the numerical itself, 17.70. What is T? T is the width of the taxiway. So the maximum width, the variation is how much? Is not given over here, but the variation how much? 7.5 to 22.5. So we are taking the maximum over here is 22.5. Okay. Then thereafter what you have is you have to find out the value of S.
एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो पीछे वाला मेन गियर है जो टैक्सी वे पे चल रहा है उसके मिड पॉइंट से लेके कहाँ तक, एज ऑफ द पेमेंट तक निकालना है। तो इसका डिस्टेंस तो आपको गिवन है, ये मैं आपको बताता हूँ। और उसमें जब हमने एस निकालना है तो ये 6 का फैक्टर कहाँ से आ रहा है, ये फिर से हम बनाते हैं। ये आपके दो व्हील्स हैं, ये आपका टैक्सी वे है। यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट एस, सो एस इज व्हाट, एस इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द मेन गियर टू दी पेमेंट एज। ओके जी। सो यहाँ पे आप पीछे जाके देखेंगे कि जो ट्रेड ऑफ द मेन गियर उसने दे रखा है, उसने 6.62 दे रखा है। 6.62 दे रखा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 3.31 हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँ ताकि मैं पेमेंट एज तक पहुँच जाऊँ? मैं क्या ऐड करूँगा, I will add 6 meters to it so that I reach up to the payment edge. Why 6 meters? What is already given as per the equation. The radius of the taxiway should be provided so that the distance of the LU strut of the main gear, the outer wheel, is not less than 6 meters from the pavement edge. कि 6 मीटर नहीं होना, 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज नॉट लेस देन 6 मीटर फ्रॉम द पेमेंट एज, इस हिसाब से उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए व्हाइल इट इज टेकिंग द टर्न। सो हियर वैल्यू ऑफ एस, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 6 प्लस जो 6.62 दिया था उसका आधा, बिकॉज मिड पॉइंट से ले रहे हैं। नाउ ये सारी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यू गेट योर वैल्यू। The absolute minimum turning radius for a subsonic aircraft, regardless of any speed, is how much? Is 120 meters. Okay, एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए भी ये रिकमेंडेशन है कि इतना रेडियस होना चाहिए। ना सिलेक्टिंग द मैक्सिमम वैल्यू, अब हमारे पास क्या है, तीन वैल्यूज आ गई, एक सिंपल इक्वेशन से, एक हॉर्नजॉफ इक्वेशन से, एक जो मैंने अपना क्राइटेरिया लगा दिया। Now selecting the maximum value amongst the three cases as discussed, because ये maximum value ही सारी values को satisfy करेगी। हमारा रेडियस कितना होना चाहिए, हमारा रेडियस 120 मीटर होना चाहिए, ठीक है जी। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो व्हाट डू वी हैव, यू हैव एग्जिट टैक्सीवे को एक्सप्लेन कर रखा है। अ बिजी एयरपोर्ट टिपिकली construct high speed and rapid exit taxiways in order to allow the aircraft to leave the runway at a higher speed. This allows the aircraft to retain the runway quicker, permitting another to land and depart in a shorter space of time. So exit taxiway, rapid exit taxiway क्या है? These are high speed. Means the प्लेन को एकदम रनवे पे स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जैसे ही स्लो हो जाएगा तो उस स्पीड पे वो एग्जिट कर जाएगा। दोज टैक्सीवेज हैं होना है एग्जिट टैक्सीवेज। Okay, so here you have is a picture of an exit taxiway. You have a main runway. Okay, then from the main runway you have this rapid exit taxiway. You have the maximum portion of this rapid exit taxiway in a straight line. So this is, so from, if you have the plane that is entering from this side and landing from this side, अगर यहाँ तक वो slow हो गया तो वो एकदम यहाँ से उसी speed पे वो exit कर रहा है। Then these are some factors that are affecting the location of the exit taxiway. That how many number of exit taxiways that you are supposed to give along a particular runway, what is the exit speed, what is the type of the aircraft you are using, what is the weather condition, what is the topographical feature, what is the pilot variability. So depending upon all these features, you will have to decide that how many taxiways are supposed to be given along a particular runway. For example, you have is the number of exit taxiways. The number of exit taxiways to be provided decides their location. 10 देने हैं कि नंबर से क्या डिसाइड होगा कि एक रनवे है तो 10 देने हैं तो एक ही पॉइंट पे थोड़ी ना दे दोगे, ठीक है। देयर मस्ट बी सेपरेट पॉइंट्स along which these 10 exit taxiways should be given, so it will help you decide the location. If there are only 2 exit taxiways, they are provided at the runway, obvious है कि अगर 2 exit taxiway है तो उसको तो आप एंड में ही दोगे। And if more than 2, then if you have more than 2, then what will happen is that you will distribute it depending upon your requirement.
Now, what is the exit speed again? The maximum speed with which the aircraft can turn and enter into the exit taxiway is limited for an each aircraft. कि हर एक प्लेन की अलग अलग होगी. So it requires a certain length of the runway to reduce its speed from the landing speed to turn off speed, thus affecting the location of the taxiway. So eventually what we require is we require the plane to slow down till such an extent that it is able to take the turn. It is able to negotiate. It is able to negotiate the turn without centrifugal force affecting it. Then you have is different types of the aircraft. Different types of the aircraft land at different speeds. So eventually हर एक को कम या ज़्यादा distance चाहिए होगा. So depending on that, you will decide the position of the exit taxi. Then weather condition, wind, temperature, fog affect the landing speed of the aircraft. Again, if your landing speed is affected, again हो सकता है आपको कम या ज़्यादा distance चाहिए. So then based upon the same distance again you will decide the point where the exit taxiway is supposed to be here. Topographical features, in high altitude or deep valley reduces the visibility which affects the landing speed. Okay, so the obstruction in the approach and the turning will also influence the landing speed. Again, the landing speed will be affected. You are going to a higher topographical area, visibility is less. So it may happen less or more distance is required again. Depending on the speed, you will actually eventually decide. Only if two are to be given, then obviously at the end of the particular path or the airfield, the runway you will be giving. If you have more than two, then you have to decide depending upon the speed with which the various aircraft are landing. In pilot variability, the rules for landing the transport category aircraft are quite precise. Even then, some variability amongst the different pilot does occur, hence affecting the location of the exit taxiway. It may happen that कई पायलट थ्रेशोल्ड पे लैंड कर रहे हैं, कई पायलट एमिंग पॉइंट पे लैंड कर रहे हैं, कहीं थोड़ा सा और आगे लैंड कर रहे हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दैट द पोजीशन ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे इट मे वेरी. There is separation clearance between the two. It may happen that you are giving multiple taxiways. ठीक है, तो अगर हम मल्टीपल टैक्सीवेज ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि वो उसको कितना दूर रखना हमने आपस में, उसकी क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए. तो उसको हम सेपरेशन क्लियरेंस कहते हैं. फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ वन टैक्सीवे टू द सेंटर लाइन ऑफ द अदर टैक्सीवे. और दिस यू कैन रीड इट आउट योरसेल्फ. Then you have is holding apron. The holding apron are what? Holding apron are located where the aircraft wait for their turn to take off and finally be checked before takeoff, provided near the runway end. Holding apron क्या है कि extremely at one end they are provided where the aircraft is supposed to wait. Okay, and the final checks are supposed to be performed before it takes off. Also known as run up or warm up pad. Again, the entire description about the holding apron is given to you. So this sums up your chapter of the taxiway. So in both the chapters you have near about 30 to 40 slides. So in this you have 33, in the previous you have near about 35 to 40 slides. So this sums up your entire chapter, the entire syllabus, your railway and your airport engineering summed up. So now you will have your MSTs that will be conducted from 24th onwards, and the remaining chapters that were not covered in MST1 would be coming in for MST2. So I hope everyone has submitted assignment number 2. Those who have not submitted, you still have time to submit. So kindly submit it by today. Anyone is having any problem, you can ask me. Anything that needs to be asked, please let me know. Anything that needs to be asked, please let me know. Anyone is having any doubt, any problem?
सर MST2 का सिलेबस No क्या doubt, होगा? sir. All the chapters that were not in MST1. ओके सर. You eventually have a lot of chapters But sir, that you have covered after MST1, including your railways as well. हम अभी देख लेते हैं, आपको अभी क्लियर कर देते हैं. Let me just open the syllabus, then we can discuss. अच्छा ये देखिए, you can see the chapters. सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ये पार्ट 1 Yes. हो गया था MST1 में, yes, sir. है ना? उसके बाद आप लगा के चलिए, ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी हो गया था. अब चैप्टर नंबर 4 से लगा ले. चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स यू विल हैव इन MST2. Points and crossing, railway station and yard, signaling, interlocking, modernization, introduction to airport, airport planning, airport orientation. Then you have is the taxiway, aircraft parking, and then you have the visual aid. From chapter number 4 onwards, you will have the syllabus for MST2. Any doubt? Anyone is having any doubt? No, sir. Thank you for attending the class.